So let's now talk about that. How can we use these moving averages for figuring out a positional trading, or if I'm a short-term intraday trader, let's say, how can I use these moving averages? Now, I would like to talk a little bit in detail, a little bit about the nature of moving averages so that it's useful for you to understand my perspective from where I am thinking. Now, we are talking about moving averages. And we have seen, and you understand, that moving averages are lagging in nature. And the main purpose it serves us, it helps us to give a confirmation. It gives us a confirmation whether in terms of the trend, whether the trend is up, whether the trend is down, whether the trend is flat, etc., etc. So it's a lagging, it's a slow, it helps us to give us confirmation. So there is no element of timing in it. In simple language, moving average मुझे प्राइस के जो बिहेवियर है उसको एक स्ट्रक्चर देता है, एक लुक देता है कि हाँ ये प्राइसेस एक तरफा ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है या कहीं नहीं जा रहा है, अगर सब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर. तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डुअल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिस्टम्स. मतलब इन अदर वर्ड्स, मैं मूविंग एवरेज के बिहेवियर को बेस करके अपना ट्रेड को टाइम करना नहीं चाहूंगा. इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होता है, वो होता है. विल डिस्कस दिस राइट नाउ. बट मैं पर्सनली वो नहीं करता और मैं वो सजेस्ट भी नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, वट एवर लिटिल अंडरस्टैंडिंग आई हैव विथ माई एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक स्क्रू को वॉल पे स्क्रू ड्राइवर ना इस्तेमाल करके मैं प्रॉब्ली एक प्लायर्स या एक हैमर को यूज कर रहा हूँ. मीन्स I think that I am not using the right tool for this purpose. ये मेरा सोच है. But nevertheless, if this is my thought process, अगर ये मेरा सोच है, then with that सोच, how can I use moving average for any kind of trading? So let's talk about positional trading. First and foremost, that will be relatively easier. Let's talk about positional trading. Now, when we talk about positional trading, which is anything but intraday trading, you are holding the position. Moving average, dual moving average crossover systems is the most simple, elegant, and yes, extremely useful, extremely profitable when there is a trend. So the first and foremost is the dual moving average. Dual moving average crossover system. Yeah, I think so. 1980s, late 1970s, 1980s. Very, very famous, very, very in trend, in focus, and a lot of traders in Wall Street was trading based on these various moving average crossover. The computers had, of course, had come, it's picking up, but I think they used to test it out in punch cards, जैसे back test करते थे, check करते थे कौन सा moving averages use करना चाहिए. So let's break this down. If we break this down, dual moving average, दो moving average, उनके crossover, एक दूसरे को काट रहा है, crossover कर रहा है, उसका ट्रेडिंग सिस्टम. वेरी सिंपल, एज आई सेड, सिंपल, एलिगेंट, प्रॉफिटेबल, but only profitable when there is a trend. This is not much difficult. हम लोग quickly देख सकते हैं. Let's come to this Tata Steel. Now, when we come to this Tata Steel chart and we come to this moving average, this is the moving average ribbon that we had plotted 13, 21, 34. तो चलिए एक को हम अनचेक कर देते हैं, सिर्फ दो रखते हैं. ठीक है? Let's say we have 13, 21. Let's keep it 13, 21 for all sake. We have dual moving average, 13 and 21. So 13 and 21 will crisscross each other. मैं price को hide करता हूँ. So crisscrossing each other, one area is this, and another area is this, another way is this. The one on the below is cutting, 13 is cutting 21 from below. The one on the top, 13 is cutting 21 from above. The one which is happening down below, मतलब 13, तेरा exponential moving average, 21 moving average को नीचे से काट रहा है. This is called a bullish crossover, positive crossover. मतलब short-term moving average, long-term moving average को काट रहे हैं. In classes, I used to give them names like बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ के अंदर. The shorter moving average you can call छोटे मियाँ. The larger moving average you can call बड़े मियाँ. So when the smaller moving average is going up, it means market is going up. Moving average reacts to price. Price ऊपर जा रहा है, moving average ऊपर जा रहा है. Moving average अपने larger moving average को काट के ऊपर की तरफ जा रहा है. This is a sign of strength. That's why bullish crossover या फिर positive crossover.
On the other hand, उसके ठीक opposite concept is bearish crossover. Bearish crossover is when the 13 is cutting the 21 and it's done. अब आप 1321 यूज कर सकते हो, 510 यूज कर सकते हो, 1226 यूज कर सकते हो. There are various combinations. 1226 also a good combination. You can note it down. Now, dual moving average, right? So bullish crossover क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए. बेचे कब? If you use the classic dual moving average system, अगर आप इसको एकदम pure play रखना चाहते हो, then this is a pure trend following system. This is a pure trend following system, which means that you find the trend. Trend कब establish होगा? जब crossover होगा. अब trend establish होने के बाद trend को follow कीजिए. And इसको pure रखने के लिए, if you want to keep it pure, कुछ बीच में कुछ उंगली नहीं करेंगे हम लोग, तो इसका मतलब ये होगा कि आप यहां बेचेंगे जब डाउन क्रॉसओवर हो रहा है, तब तक पकड़ के रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे जब तक कि ऑपोजिट नहीं होता. नो स्टॉप लॉस, नो टारगेट, ओनली एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट. बुलिश क्रॉसओवर हो गया. अगर आप इफ यू आर ट्रेडिंग इन द डेरिवेटिव्स मार्केट, इफ यू हैव गॉन शॉर्ट, फिर आप यहां पे जब बुलिश क्रॉसओवर होगा यहां पे आप खरीद लेंगे और खरीद के आप बैठे रहेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड, विद द होप कि एक लंबा सा मैराथन ट्रेंड बनेगा और जब ये नीचे की तरफ क्रॉसओवर होगा तभी मैं बेचूं. सिंपल. Yes, anyone can follow this, right? Any, I think 10-year-old, 7-8-year-old student can follow this. Red line cutting the green line, red line cutting the green line from below or above. That's it. और कुछ नहीं. Does it make money? Yes, big time, but only possible. That big time answer is only possible when, मैं price को लाता हूं अभी, when there are mega moves, one-way moves. This is where you will make. This is where you will break, you will lose, you will lose, you will lose, you will not make much again on the short side. So whenever there is a trend to follow, you make money. Now, markets do not trend all the time, right? Markets go through phases of trending market, sideways market. So अगर आपका सौदा, अगर आपका ट्रेड, अगर आपका चार्ट साइडवेज रेंज बाउंड बन जाता है, तो आप इस सिस्टम से कमा नहीं पाएंगे, उल्टा लॉस ही होगा, गारंटी. ऑन द अदर हैंड, जब वो रेंज से निकलेगा, whenever it comes out of the range and it picks up big time trend, up or down depends, with simplicity, very simple way, you can generate returns. The dual moving average crossover system, you can use 1321, you can use 1226. 1226 also is a pretty consistent combination. But it's good for positional trading. It is good for positional trading. I will not suggest this for intraday trading. अब इसका logic मैं समझाता हूँ क्यों. I am an intraday trader. Let's say. So मैं daily, weekly, monthly charts में तो मेरा interest नहीं है. It's not my interest to look at weekly, monthly charts. So let's say I am looking at 15-minute charts. 15-minute. ये रहा 15-minute chart of Tata Steel. So I was talking about the biggest disadvantage of an intraday trader. So what is the biggest disadvantage of an intraday trader? One of the biggest disadvantage of an intraday trader is the fact that he cannot sit on his trade for long. उसको अपना सौदा 3.5 या 3.25 by 315, if we talk about Indian equity market standards, 315, 320 तक close करना ही है, या फिर अपना broker ही उसको close कर देगा. ठीक है? Which means what? Which means that you have to be very good. You have to select a stock right, you have to time it right, you have to, hopefully the stock will start to move in your direction. इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलते, आपको टाटा स्टील अच्छा लगता है, आपको लगा टाटा स्टील आज ऊपर जाए और कुछ 15-minute चार्ज देख के आपने टाटा स्टील को खरीद लिया, यू बॉट, एंड लेट्स से दोपहर के 1 बजे, 12:30, 1 बजे, तो आपने आइडेंटिफाई किया, आपने परचेज किया, एंड इट्स सो डिफिकल्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडर कि वो ट्रेड हैज टू मूव इमीडिएटली इन योर फेवर. सोचो 2 घंटा वो साइडवेज रहा, फिर 3 बजे चलना चालू हुआ, आपको कोई फायदा नहीं होगा, ज्यादा फायदा नहीं होगा, बिकॉज बाय द टाइम वो 315 वो एकदम एक ब्रेकआउट मूव दे चुका है, आपका तो सौदा कटना ही है, फिर नेक्स्ट डे वो खुलता ही है 2 टक्का. सो यू आइडेंटिफाइड इट राइट, but you timed it wrong, correct?
And this is a very, very important aspect of a successful intraday trader. He has to be an intraday trader. If you ask me the way I see intraday trading, I have to be very good in all the aspects. Identifying the right stock, identifying the right entry point, and identifying the right exit point. It's so difficult. I identify the stock right, I identify the entry right. वो चल रहा था. I was making money. All of a sudden, मैं exit नहीं किया, मेरा पूरा intraday profit dissolve हो. It's a very common thing. The first one that I told you, I identified the stock, I entered, but वो movement दिया काफी late. So my timing was wrong. And अगर आपका identification of the stock ही गलत होता है, फिर entry exit का तो छोड़ ही दीजिए. So this particular reason I personally think is what makes an intraday trader और intraday trading, ये जो बदनामी है ना, that intraday trading करके कोई कमा नहीं सकता या intraday trading कोई फायदेजनक काम नहीं है, it's primarily because of this. I would say it is not as easy as positional trading. Now, easy is probably a loose word, मुझे use नहीं करना चाहिए. Positional trading में भी pros and cons है, but positional trader के लिए क्या ना, थोड़ा सा वक्त है कि हाँ, आज अगर 2 दिन कंसोलिडेट करे तो तीसरे दिन चौथा दिन चल जाएगा, right? So that scope is there for a positional trader, which is not in intraday trading. Now, if you've understood this, that is my viewpoint, and if you appreciate, if you resonate with it, then will you use moving average combinations to do intraday trading or not? Moving average combinations or moving averages is not a timing tool. It's a confirmatory tool जो confirm करता है प्राइस गिरने के बाद बताता है प्राइस गिर चुका है, ऊपर जाने के बाद बताता है प्राइस ऊपर जा चुका है. तो क्या आप वैसा एक टूल इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट या लॉन्ग करने के लिए? Let's take an example. Let's take an example. We're taking a look at 15-minute chart of Tata Steel. This is chart of Tata Steel's 15-minute chart. This Tata Steel's 15-minute chart has given a breakdown or a negative crossover over here. तो प्राइस अभी आप अपने को क्लोजिंग प्राइस से निकल के थोड़ा कैंडलस्टिक्स में आना पड़ेगा. सो दिस क्रॉसओवर, द क्रॉस डाउन हैपेंड हियर, यहाँ पे, राइट? सो आप सोचो यहाँ पे क्रॉस डाउन हो जाता है तो यहाँ पे सीएमपी में आप इसको बेच देते. उसके बाद ये 15 मिनट, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स उस ऊपर रहता है, आपके शॉर्ट के प्राइस से ऊपर रहता है फॉर 45 मिनट्स. दिस एरिया यू विल नॉट अप्रिशिएट, especially for an intraday trader, you will not appreciate. Then it starts to fall. An ideal intraday trading would have been, I shorted somewhere here, मेरा सौदे का नीचे आता है और सीधा गिरा देता है. That is good timing. That's a sign of good timing. A sign of lousy timing is आपने शॉर्ट किया, उल्टा ऊपर चला गया, वो 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट ऊपर ही रहता है, फिर जाके गिरता है. करेक्ट? But was the timing good? No. Maybe वो और ऊपर चला जाता. Please understand, if you want to do intraday trading, focus on timing. You might even choose the wrong stock. You might choose the most lousiest stock. But if you time it well, your job is done as an intraday trader. So rather than के पहले मैं उसके पहले और एक चीज बताना चाहता हूँ. ये तो रहा एंट्री. सोचिए आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, योर शॉर्ट. और अगर आप प्योर प्ले करना चाहते हो, अब ये तो नीचे ही जा रहा है, अब ये कल खुलेगा, अब कब ऊपर के तरफ क्रॉसओवर होगा तब मैं इसको काटूंगा. दिस इंट्राडे ट्रेडर्स कैन नॉट डू. लेट्स से दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग हैपन, द लोएस्ट पॉइंट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, बट आप नीचे से प्रॉफिट छोड़ रहे हो. यू हैव टू लीव प्रॉफिट्स इफ यू वांट टू प्ले द क्रॉसओवर. फिर जब ये क्रॉसओवर होगा तब जाके आप इसको काटेंगे, तो नीचे से काफी हद तक निकल जाएगा, ऊपर से भी काफी हद तक निकल चुका है. गुड फॉर पोजिशनल. ये पूरा मूवमेंट अगर 3-4 महीने तक चलता, फाइन. नॉट गुड फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव. सो आई फील सो. आई एम नॉट सेइंग दैट कंप्लीटली नॉट. सो व्हाट इज माय सॉल्यूशन? आई वुड सजेस्ट दैट you use मूविंग एवरेजेस, नंबर 1, टू कंफर्म कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है. इसका मतलब जब टाटा स्टील यहाँ पे नेगेटिव बेयरिश क्रॉसओवर दे दिया, मतलब यहां से इस कैंडलस्टिक से जब तक पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं होता है, आपका ट्रेड करने का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो. सो नंबर 1, इट गिव्स यू अ डायरेक्शन टुवर्ड्स योर ट्रेड. तो आप खुद को बोलेंगे तो मैं टाटा स्टील में सिर्फ शॉर्ट करने का इरादा रख रहा हूं. क्यों? क्योंकि मेरे मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन नीचे की तरफ.
So moving average for an intraday trader is giving you the direction of your trade. अब direction of your trade से तो होएगा नहीं, because अभी मुझे trade को time करना है. How do you time it? In this case, what I suggest is once you have got the direction, इस candlestick में आपको direction मिल गया नीचे की तरफ, you wait for the candles to go towards that combination. You wait for candlesticks to touch your combination, to go towards whatever combination of moving average you're using. यहां पे हम लोग 1321 को इस्तेमाल कर रहे हैं. Essentially मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूं, पुल बैक ट्रेड. आप मूविंग एवरेज को इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज इट एज अ पुल बैक टूल. आप मूविंग एवरेज को ऑन अ पोजिशनल टाइम फ्रेम यूज इट एज अ ट्रेंड फॉलोइंग टूल. ठीक है. द मोमेंट इट टचेस योर मूविंग एवरेज, दिस उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे आप ऑर्डर लगाना चालू करें. जिस कैंडलस्टिक पे ये टच कर रहा है उस कैंडलस्टिक के नीचे, इस कैंडलस्टिक के नीचे आप शॉर्ट करो. दिस इज अ बेटर वे टू ट्रेड in the direction of the moving average. This is what I'm suggesting. हाँ, this kind of moves will also have, means आप जो भी strategy use कर लीजिए, आपको कुछ हद तक money management, risk parameters, etc. use करना ही है. And ऐसे setups के साथ हम दूसरे indicators को भी डाल सकते हैं to make the trade better. But for intraday trader, a good thing is number one, the direction of the trade is understood, identified. And number two, it helps me to time. मैं wait करूंगा pull back के लिए. जब वो market price मेरे moving averages के पास आ जाएंगे, टच करेंगे moving average को, उसके बाद जो वो lows बनेगा, let's say for a short trade, जब वो lows बनेगा या जो highs बनेगा for a long trade, उसके ऊपर मैं trade लेना चाहूंगा. Now यहाँ पे I'm not going to go too much into technical details, but ये सब area पे जब आप short का सोचेंगे या ये सब एरिया पे जब आप लॉन्ग का सोचेंगे इसको कैप्चर करने के लिए, इट्स ऑलवेज गुड दैट सम काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन कम्स फ्रॉम योर कैंडलस्टिक्स. अगर आप जापानीज कैंडलस्टिक्स यूज करते हो, सम पैटर्न्स लाइक अ हैमर, हैंगिंग मैन, एनगल्फिंग, स्पेशली बुलिश बेरिश हरामी पैटर्न, इनसाइड बार्स, these kind of powerful candlesticks or bars are helpful, definitely helpful. इससे थोड़ा और अगर deviate करेंगे आप, अगर आपको हाइकेनाशी का अंदाजा है, you can use Heikin-Ashi also. Heikin-Ashi is a brilliant way of understanding the price behavior, little modified, but you can use that also. But my objective to share with you over here is थोड़ा हटके use कीजिए in an intraday, not as a timing tool. ये time करने का tool नहीं है. It's a tool which gives us a structure of the chart. बताता है कि price का रुख किस तरफ है और उस रुख के तरफ अपने को ट्रेड करना. इंट्राडे के लिए पुल बैक कीजिए, पोजिशनल के लिए ट्रेंड फॉलो कीजिए.